everybody, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I am going to do gel eyeliner versus liquid eyeliner. And इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना. So let's get started. So guys, मैं राइट हैंड साइड पे जेल आईलाइनर लगाऊंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे लिक्विड आईलाइनर. सो आई एम यूजिंग दिस कलर एसेंस जेल आईलाइनर which is MRP at rupees 499. I'll try to mention a gel eyeliner at a very affordable rate, so do check out my description box. So देखते हैं मैं कैसे अप्लाई करूँगी. So guys, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरा दिख जाए लाइनर में कैसे अप्लाई करने वाली हूँ. So let's get started. दिख रहा है ना? दिख तो रहा ही है. So guys, now I'm applying the gel eyeliner using the color essence eyeliner and the brush. Guys, gel eyeliner हमें बहुत voluminous and thick eyes देता है. If you want a dramatic eyes, go for gel eyeliner instead of liquid eyeliner. I'm using this Maybelline Colossal Liquid Bold Eyeliner. So let's apply it. If we compare liquid eyeliner to the gel eyeliner, liquid liner is best for daily use, but gel eyeliner gives you a vibrant face, so it is best for wedding and a party purpose. So guys, let's move to the drawbacks of the gel eyeliner. The basic drawback that a gel eyeliner gives us that if we apply the micellar water to remove gel eyeliner, वो बहुत blackish eyes हमें बाद में दे देता है. अच्छे से gel eyeliner remove नहीं होता है क्योंकि gel उसका बहुत sticky जैसा होता है जो कि हमारी eyes में फिर भी हल्का सा shade छोड़ जाता है. So this is the drawback of gel eyeliner. If you want to use gel eyeliner, use it for wedding and party purpose. Not use gel eyeliner for daily use. It is my pro tip. Use liquid eyeliner for your daily basis. As you can see, मैं कितना ट्राई कर रही हूँ फिर भी वो अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा है. मेरी आईज रेड भी हो गई हैं. So guys, let's move to the liquid eyeliner. Liquid eyeliner अच्छे से remove हो जाता है. You can use it on daily basis, but liquid eyeliner हमारी eyes dry कर देता है. तो so do apply moisturizer before liner. So guys, thank you for watching. I hope you have loved my video. Do like, subscribe, share, comment down below, and do tell me what I'll do in my next video on daily basis. Bye bye. Mwah.